Okay. So don't worry, I will be sharing this sheet with you. Okay, the Mhm. PDF file of this with you. So we start with the sum. हाँ. Uh, who is the author of this book of which you have sent me the thing? Like, is it from Manan Prakashan or Shade Publication? Shade. It's from Shade. Shade, no? Okay. Let us start with a basic sum. Okay, so it's Hmm. from Shade Publication book. Yes. It's illustration number 5. Okay, Hmm. and page number is 122. Page is 122. Okay, now let us go through the Hmm. question once. Can you please mute Tanvi? Whenever you have a doubt, you can unmute and ask. Okay? Okay. Thank you. Chalo. So we start with illustration 5. A limited company was incorporated on 1st July 2017 in order to purchase remaining business from 1st January 2017. Now, see, they are saying that the company was incorporated on 1st July 2017, means they got their certificate of commencement business on 1st July. So, कभी भी question आता है, what we do is first we write date of acquisition, correct? What is our date of acquisition in the problem? We acquired the business on 1st January 2017. And when was our company incorporated? Date of incorporation. Okay, it was incorporated on 1st July 2017. Okay, the following particulars were available. Total sale for the year was 90,000. Sales from 1st January to 31st May 2017 was 30,000. Gross profit for the whole year was 27,000. Total expenses for 2017, including managing directors' remuneration 1,500 is 20,000. Company's share capital is 1 lakh. Find out the profit prior to incorporation and after incorporation and prepare profit and loss account. So in this scenario, what is our year ending? Financial year It is December, ending 31st December. 31st 31st December December. 2017. Correct. Now what we have to do is, firstly, the main thing would be to calculate time ratio. You always have to calculate it. Now, if you see 1st Jan to 30th June, Jan, Feb, March, April, May, and June is 6 months. So your time ratio is 6:6, correct? Because 1st Jan to 30th June is 6 months, and 1st July to 31st December is remaining 6 months. So time ratio would be 6:6. Correct? Now, what do we do is we prepare profit and loss account. Okay, they have asked us to prepare profit and loss account for the year ended 31st December 2017. We have it would be debit particulars, uh, pre-incorporation, then post-incorporation,
And what we will be doing is, for our simplification, we will be writing total column also. Okay. Are you with me? Yes, sir. Okay. So this is how we prepare profit and loss account. Okay. चलो इसको बोल्ड कर देते हैं. चलो स्टार्ट करें अपन. Sure. Okay. So let us go to the profit and loss account, rather the adjustment number 3. See, our problem start from, see, mostly the problem would start from gross profit only. Okay. We won't have to prepare the entire trading and profit and loss account. They will be directly giving you profit and loss account. So the problem will always start from gross profit. So our gross profit comes from uh, trading account credit side, which is then carried forward to P&L credit side. So hence we on the credit side we write by gross profit brought down. Okay. Correct. What is our total gross profit? Let us check our total gross profit. It is 27,000. So here I am writing 27,000. 27,000. Okay. Next, they are saying that total sales for the year was 90,000. But this would be helpful for us in finding the sales ratio, correct? So right now we are just keeping it aside. Total expenses for the 2017 was 20,000. Okay, so two expenses. Total expenses they have given us, including managing director's remuneration. So अभी just discuss किया था managing director remuneration कहाँ जाएगा, कौन से में जाएगा, प्री या पोस्ट में? Post. Post. तो इसको अलग से लिख दूं, managing director's remuneration. Now see, there are certain expenses which you cannot net it off. You have to show it separately. So managing director's remuneration is one of them. कौन बोलते हैं, शेड्यूल 3 बोलता है, ठीक है. तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन तो हमको दे दिया है, कितना दिया है, 1500. तो ये पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा, मतलब प्री में 0. करेक्ट. Okay. So now see, Yes. what I have to do is I have to allocate the balance. Total expense कितना था अपना, 20,000. करेक्ट. जिसमें से 1500 मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन वी हैव ऑलरेडी रिटन इट. तो अभी बैलेंस कितना बचा है, 18,500. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, इसको मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, वर्किंग नोट बनेगी इसकी. ठीक है, ये वर्किंग नोट बन गई टाइम रेशियो की. नाउ we have to find sales ratio also.
Now they have given us some information with regard to sale. Let us see what they have said. Working note 2, sales ratio. They are saying that total sales is, what is our total sales? 90,000. Out of which sales from 1st Jan to 31st May. Okay, they are saying that sales from 1st Jan to 31st May is 30,000. 30,000. ठीक है, तो ये 30,000 हो जाएगा. So balance जो है sales from 1st July to 31st December. ये कितना हो जाएगा? 60,000. कैसे 60,000? टोटल हमको Sir, 90,000 it's पता है. 1st June or July. जुलाई ना? जून मतलब 31st मई का वो दिया है, बट व्हाट अबाउट जून का? जून का आई डिडंट. अच्छा, ओके ओके, सॉरी. जस्ट अ मिनट. ये लोग ने क्या बोला इसमें? Sales from 1st Jan to 31st May is 30,000. And okay, just let me go through it. Is there any issue? I guess there is a typing error. So this is 30th June. ठीक है, sales from 1st January to 30th June. Okay, please correct this in your solution. Rather, not solution, question. Did you get this? Yes sir. Okay. So what is my sales ratio now? It is equal to 30,000 is to 60,000, which is equal to 1 is to 2, correct? Yes. Okay, so अभी ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करेंगे हम? सेल्स रेशियो के बेसिस पे डिवाइड करेंगे. तो सेल्स रेशियो तो अपना 1:2 आया. तो इट विल बी 27,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3. और बैलेंस क्या आ जाएगा? 27,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, तो हमने इसको एलोकेट कर दिया. करेक्ट. नाउ इधर भी कर ही देते. ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट इज अवर टोटल ग्रॉस प्रॉफिट? 27,000, जिसमें से व्हाट इज बाय प्री इनकॉर्पोरेशन? तो प्री इनकॉर्पोरेशन कैसे हो जाएगा? 27,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3. और बाकी अगर करना ऐसे करना तो ऐसे भी कर सकते, टोटल में से इतना माइनस कर दो तो 18,000. और यहाँ पे वी कैन राइट वर्किंग नोट नंबर 2, रेफरेंस दे देने का. नाउ नेक्स्ट एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस मैंने बोला था कि जनरली दे गो इन टाइम रेशियो अनलेस एंड अदरवाइज they have specifically mentioned it. So in this scenario, we will be distributing this 18,500 in time ratio. Okay. So what is my time ratio? It is 6 is to 6, which is equal to 1 is to 1. Correct? Yes. So what is my total expenses now?
18,500 है, 20,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें से डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन इज गिवन। हाँ वो तो हो गया ना। तो अभी इसमें क्या आएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, सेम इसमें भी होगा, राइट, यस। इक्वली होगा। तो ये इंटू 1/2 हाँ, और दूसरा इसके लिए क्या कर देंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे। तो इसमें हमको क्या मिल जाएगा, 9,250। 9,250। अभी व्हाट वी डू इज वी क्लोज अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले टोटल कॉलम को क्लोज करेंगे, अगर देखते हैं तो अपना क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है। और ये माइनस, ये दोनों को कर देंगे माइनस। कितना बचता है, 7,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 नेट प्रॉफिट। ओके, कैरीड डाउन लिख देंगे। और बट ऑब्वियसली इधर 0 0 डाल देंगे, रीजन मैं बताता हूँ क्यों, है ना। चलो, तो यहाँ पे 7,000 आ गया। नाउ if you look at the debit side of profit and loss account, pre incorporation period में अपना डेबिट साइड हैवियर है, करेक्ट। डेबिट साइड हैवियर है। तो यस। मैंने क्या बोला था कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व होता है, बट यहाँ पे हमको प्री इनकॉर्पोरेशन में लॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है, प्री इनकॉर्पोरेशन में हमको लॉस हो रहा है। तो 9,250 माइनस 9,250 का लॉस हो रहा है। सो ये जो 250 का लॉस हुआ दैट विल बी योर गुडविल, ठीक है। ओके। ओके, और नेक्स्ट इफ वी नाउ क्लोज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो याद रखना प्री इनकॉर्पोरेशन में अगर कभी भी लॉस होता है तो दैट विल बी योर गुडविल। गुडविल। तो प्रॉफिट हुआ तो पीपीआई बोलेंगे उसको। और यहाँ पे हम लिखेंगे 2। हम्म, आई एम नॉट गेटिंग यू। योर having वॉइस profit योर that वॉइस is transferred to योर एक्चुअली योर वॉइस इज क्रैकिंग। now। अभी आ रहा है हाँ अभी आ क्योंकि रही है। क्या बहुत रेंज इशू है। हाँ। हम्म। अगर हमें प्रॉफिट होता है लॉस की जगह, देन हम्म, ट्रांसफर इट टू, राइट। देन अगर प्रॉफिट होता है तो वी ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व। I'm actually not getting. Can you please check with your net connection? Your voice is still cracking. End of session, let it be after। Can you please exit and rejoin? I'm yet not able to hear you clearly. Your voice is cracking. Hello? Sir, now can you hear clearly?
Yes, yes. Huh. See, now we have a loss in this problem, so we are writing it as by goodwill account. But if we are Hmm. having profit, we will write it as capital reserves, na? By capital reserves account. No, by it will be two. We will be writing it on the debit side. Sorry, two. Sorry, I mean that only two capital Hmm. reserves. Actually, we would be Okay. writing two. See, what we will be doing is we won't be writing. Yes, it will be transferred to capital reserve. Hmm. Yes, we Sir, will be can you directly writing. explain the logic behind writing this loss as goodwill account? Uh, See, this is not your ordinary loss. This is not your operating loss. Means it is not the loss which you have incurred in the ordinary course of your business. Now, if you are treating the profits prior to incorporation as capital profit, then why are you treating the loss as a revenue loss? Shouldn't it be treated as your goodwill only? Like it should be treated as a capital loss. Hmm. So that is the logic. Means this is somewhat you have paid extra. Actually, the business was loss making in that particular period, in the pre-incorporation Huh. period. So this is a type of actually Huh. you can see that this is a capital payment only. Goodwill account 250 is capital payment, like capital loss. Na? If you are treating it, if you are Hmm. treating profit prior to incorporation as this one capital profit, then why are you treating the loss then as revenue? Even that should be treated as capital. Correct? Yes. हम्म हम्म Huh. Right. ऐसा तो नहीं कर सकते हो कि ट्रीटमेंट चेंज कर दो कि लॉस आया तो रेवेन्यू, प्रॉफिट आया तो कैपिटल, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता. ठीक है. No. हम्म इफ यू वांट वी कैन एलिमिनेट दिस कॉलम. इसको एलिमिनेट कर देते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाएगा इसके क्लोजिंग में कि कौन सा अमाउंट किधर लिखना है, ये हमको समझेगा नहीं, है ना. तो यहाँ पे मैं 9,000 लिख देता हूँ, इधर 18,000, इसको मैं हटा ही देता हूँ. वर्किंग नोट में ही कैलकुलेट कर देंगे Sir, जस्ट. you हाँ. हाँ but you can make here no यहाँ पे जो space है for rough work even I am thinking of making it as rough work क्योंकि यहाँ से understand अच्छा होता है total column हाँ की बट वजह से. देन क्या होता है मालूम है कि इसको जब प्रेजेंट क्लोजिंग के वक्त है ना, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? जब हमको क्लोज करना होगा ना तो हाँ अपने हाँ. लिए बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा वो. तो अपन वर्किंग नोट में Okay, कैलकुलेशन okay, कर okay. लेके, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा अमाउंट किधर लिखना है, वी वोंट बी एबल टू गेट इट प्रॉपरली. ठीक है. Okay. तो मैंने इसको चेंज कर दिया. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करें. एनी मोर डाउट ऑन दिस क्वेश्चन? No, sir. चलो नेक्स्ट वन, फिफ्थ हो गया. तो सर अभी यहाँ पे कैसे हमने सेल्स रेशियो एज प्रॉब्लम ने हमें डायरेक्ट किया वैसे कैलकुलेट किया लाइक दैट हमेशा सेल्स रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय लुकिंग सेल्स एट रेशियो, एडजस्टमेंट्स. सेल्स रेशियो हमेशा कैलकुलेट करना होगा. टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो कभी भी क्वेश्चन में देंगे नहीं. हाँ बट आपने बोला था ना स्टार्टिंग में कि सेल्स रेशियो यू हैव टू डू एज हाउ प्रॉब्लम इंस्ट्रक्ट्स तो हाँ. अकॉर्डिंग टू यस एडजस्टमेंट्स वी हैव यस टू डू. यस 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 हाँ. यस. इसीलिए मैंने लिखा ओके. एडजस्टमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, देयर इज नो स्टैंडर्ड वे. जो प्रॉब्लम बोलेगा वैसे ही हम करेंगे, है ना. हाँ चलो बट तो इट वी इज आर. नॉट एज सच फॉर टाइम रेशियो. नो नो, टाइम वो रेशियो तो तो स्टैंडर्ड ही रहेगा ना. हाँ, वो तो हाँ डेट्स पे समझ जाते हैं हम. हम्म लेट अस नाउ टेक इलस्ट्रेशन 6. इट्स ऑन यस. पेज नंबर 123. हाँ. ठीक है. ये क्या बोल रहा है? गावस्कर लिमिटेड कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st May 2018 to purchase the running business of इमरान खान लिमिटेड फ्रॉम, एक्चुअली इमरान खान लिमिटेड नहीं होना चाहिए. ठीक है. फ्रॉम 1st Jan 2018. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है. अच्छा, दे परचेज द बिजनेस ऑन 1st Jan 2018. सो द फर्स्ट थिंग वी डू इज वर्किंग नोट बना लेने का कभी भी.
टाइम रेशियो. ठीक है. What I can do is, एक मिनट. हाँ. Just let me do the formatting. Let us delete this entire thing. Okay. Now, so what is our date of acquisition in the problem? We have acquired the business on 1st Jan, correct? It is 1st January 2018. The company was incorporated on 1st May 2018. And what financial year ends on 31st December 2018. So what we do is we find time ratio. Okay. So what will be my time ratio? In pre-incorporation, there are 4 months: Jan, Feb, March, April. Correct? And in post-incorporation, there are 8 months. So our time ratio will be 4:8. Are you getting this? Yes. Okay. Next, let me read the problem ahead. Now they are saying let us now do the posting. The total sales for the year ended 31st December 2015 was 5,50,000, out of which 137,500 were for the period from 1st Jan 2015 to 1st May 2015. So let us now prepare sales ratio also. Okay, now they are saying that sales from 1st Jan to, what is the date? 30th April? 31st December, year ended. No, no, I'm not talking about. What are my total sales? They are 5,50,000, out of हाँ, which, 5,50,000. they said us that sales from 1st Jan to 1st May. So I'm not taking 1st May. Let us take 30th April. Okay. 30th April is 137,500. So for sales from 1st May to 31st December, correct? It will be 5,50,000 minus 137,500, which is 4,12,500. Are you getting this? So my sales ratio is 137,500 is to 4,12,500. Now let us find this in the form of fraction. I get 4,12,500 divided by 1,37,500. It's 3. So our ratio here will be 1:3. Okay? Our sales ratio is 1:3. Did you get this? 1:3? Yes. Okay. Chalo, so we are now having our sales ratio, time ratio. Now let us start posting the items over here. Year by gross profit brought down. Okay, first gross profit brought down.
Then we are having two salaries. Two. What is the next item? What is the next Director item? fee. Director's fee. Director's fee. Just help me out, no? Huh. Director's fee. Okay. After that, to rent and access. Rent and taxes. Okay. Huh. Then two, To electricity charges. electricity charges. Then what are we having next? To insurance. Two, insurance. Okay. Then two, To commission. okay. To advertising. Next, To discount. To carriage. two, carriage. Huh. Okay. Then, To office expenses. okay. Then, To bank charges. okay. Expenses. Which expenses? Preliminary. Preliminary expenses. Okay. Two, Preliminary expenses. To bad debts. just a minute. Two, To bad interest debt. on Two, interest to on interest on loans. loan. Okay. Hmm. Bus. Then to net profit. No, no, we don't want that. We don't want it as of now. Okay. Now, what I am doing is, since there are many items over here, what we can do is, I'm inserting a column. Okay. I'm inserting a Hmm. column. Just a minute. Let us write the basis of allocation so that we don't get confused. Okay. So let us now do the allocation part. Okay. Let us first decide the basis of allocation for each and every item. Gross profit will be allocated in sales ratio. Okay. Okay. Salaries, it will be done in time ratio. Correct. Director's Time fee. ratio. Director's fee directly goes to post incorporation. Correct. Post incorporation. Rent and taxes, same time ratio. Rent and taxes. Electricity Time charges, time ratio. Yes. ratio. Insurance also, time ratio. Yes. Now, this is the Huh. commission. Commission is appearing on your profit and loss account debit side, means to say that this is your sales commission, the commission Huh. which you have paid to your agents. So this Is will it? be Huh. done in sales Sales ratio. ratio. Hmm. Advertising, सेल्स रेशियो, Sales. जिधर ठीक है ना, ये जिधर ज्यादा सेल्स उधर ज्यादा एडवर्टाइजिंग एलोकेट कर देंगे. Hmm. डिस्काउंट भी सेल्स रेशियो, Hmm. कैरेज भी सेल्स रेशियो, ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशियो, बैंक चार्जेस टाइम रेशियो. ठीक है, दीज आर दी एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट So, डिपेंडेंट ऑन योर सेल्स. यस. carriage they haven't specified whether it is inward or outward. And for ओके. inward हाँ. carriage we allocate it on time basis, but outward, नो so नो we नो 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 नो. Both the carriage, whether inward or outward,
कैरेज इनवर्ड इज एलोकेटेड ऑन परचेज रेशियो, कैरेज आउटवर्ड ऑन सेल्स रेशियो। अब भी पढ़ाया और अब भी तू गड़बड़ कर रही Oh, sorry. I forgot about purchase ratio. Sorry. ओके, नो इश्यूज। ओके, हाँ. कैरेज Okay, sir. I पीएनएल will डेबिट में आ remember रहा it. है, कैरेज Hmm. पीएनएल में आ रहा है, इट मींस कि वो कैरेज आउटवर्ड है, ठीक है। हाँ. इसीलिए सेल्स हाँ. रेशियो में हाँ. ट्रेडिंग डेबिट में रहता है। अगर ट्रेडिंग डेबिट में कैरेज रहता है, इट मींस दैट इट इज कैरेज इनवर्ड, ठीक है। बैड डेट्स भी सेल्स रेशियो Okay. में करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेशियो, ठीक है। तो पहले Hmm. हमने देख सेल्स रेशियो और डायरेक्टर्स फी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ना, तो डायरेक्टर्स फी अमाउंट क्या है? 5060 rupees. तो ये डायरेक्टली लिख दें यहाँ पे, मतलब इधर जीरो हो जाएगा। हाँ. ओके, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन और एक है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, What सिक्स is means थाउजेंड preliminary expenses मतलब वो कंपनी जब फॉर्मेशन हम मतलब एक्सपेंसेस, कंपनी फॉर्मेशन. अच्छा. हाँ. कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस है जो अब हमने राइट ऑफ किया, तो दैट विल बी इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ओनली, Okay. ठीक है। अभी सब Hmm. एक्सपेंसेस बाकी है एलोकेट करने। Hmm. हमने सेल्स रेशियो फाइंड कर लिया है, तो पहले व्हाट वी डू इज वी एलोकेट ऑल दी अमाउंट्स इन द सेल्स रेशियो ओनली, ठीक है। सो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, Sales कितना है ratio. अपना? हाँ हाँ, सेल्स रेशियो, बट व्हाट इज द टोटल One अमाउंट lakh ऑफ 1,70,500. 1,70,500 multiplied by, now what is my sales ratio? It's 1:3, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन में 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पे 1,70,500 इंटू 3/4 हो जाएगा, करेक्ट। Yes. Yes. व्हाट इज अवर नेक्स्ट आइटम? सैलरीज में आते हैं, नहीं सेल्स रेशियो वाले ही पहले खत्म कर देते फटाफट, है ना, फिर Okay. टाइम रेशियो पे आते हैं। तो नेक्स्ट अभी क्या है? कमीशन, कमीशन कितना अपना? 3,000. ना, 7,600, 3,000. वो इंश्योरेंस है। और वो तो अरे वो सर वो एडवर्टाइजिंग है ना. नहीं नहीं हाँ कमीशन 7,600 है सर. हाँ, नेक्स्ट वन 7,600 इंटू 3/4 हो जाएगा यहाँ पे, आई एम सॉरी, हाँ 1/4 एंड 3/4, 1:3 है ना। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? यस. एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कितना है? 4,500, तो सेम हो जाएगा 4,500 इंटू 1/4 और 4,500 इंटू 3/4, पहले सब सेल्स वाले कर लेते हैं। नेक्स्ट वन डिस्काउंट, डिस्काउंट का टोटल अमाउंट ओके. कितना है? 3,700, सो 3,700 इंटू 1/4 और 3,700 3,700. इंटू इंटू थ्री बाई 3 फोर by 4. कैरेज, टोटल कैरेज कितना है? 2,800, तो 2,800 इंटू 1/4, और यहाँ पे कितना? 2,800 इंटू 3/4, करेक्ट। सेल्स रेशियो वाला और एक बचता है, व्हाट इज सेल्स, बैड डेट्स का अमाउंट कितना अपना? 2,500, तो 2,500 इंटू वन बाई हम्म. फोर और 2,500 इंटू 3/4। ओके. ओके, अभी सब टाइम रेशियो वाले बच गए। टाइम रेशियो क्या फाइंड किया था हमने? 4:8 है। इसको सिंप्लीफाई कर दूं, 4:8 मतलब 4:8. 1:2। हाँ. 1:2. अभी सब टाइम रेशियो वालों को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। सैलरीज, टोटल सैलरी कितना है? एक काम करते हाँ. हैं, एग्जिट होके रिज्वाइन करते हैं, ठीक है, और फिर ये सब खत्म करते हैं आज हम ओके. लोग। हम्म.